हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम ये सीखेंगे कि हम एक्सो प्लेयर से ट्रैक्स एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट हम हमारे इस मटेरियल अलर्ट डायलॉग के अंदर उन ट्रैक्स को शो भी करेंगे एंड आफ्टर दैट जब यूज़र किसी ट्रैक पे क्लिक करेगा तो वो ट्रैक सिलेक्ट भी होना चाहिए, विच मीन्स वो प्ले भी होना चाहिए। सो आई नो it sounds a bit complex in beginning, but let's just start. So our first objective is to get tracks from exo player. So हम लोग डायरेक्टली exo player से tracks नहीं ले सकते, हमें default track selector का यूज़ करना पड़ेगा exo player से tracks को access करने के लिए। So first of all I am gonna create object of default track selector. So it will be a companion object. So let init var and which is default track selector. So track selector and colon default track selector, this one. ओके एंड नाउ फर्स्ट हमें इस ट्रैक सिलेक्टर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो मैं इसे क्रिएट प्लेयर के अंदर इनिशियलाइज करूँगा। सो सिंपली क्रिएट प्लेयर हियर। ओके सो जस्ट बिलो track selector is equal to default track selector and simply pass this and this will initialize our default track selector। and इस track selector को हमें हमारे player में initialize करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं इसका कुछ effect show हो तो। so for that I'm gonna cut it from here and just gonna paste it above and यहाँ पे जब player create कर रहे हो dot set track selector and use this track selector, okay, which means our default track selector and now just move above here audio track। हम इस track selector से सारे audio tracks extract करना चाहते हैं। so first मैं यहाँ पे एक array list बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं इन audio tracks को store करूँगा। so which will be of type string and वो एक array list होगी। so array list and string and just initialize it here and now I will iterate this track selector using for loop and try to extract all the tracks from it। so simply for I in 0 until player dot current track groups dot length, विच मीन्स हम लोग पोजीशन 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। जितनी भी इस करंट ट्रैक ग्रुप की लेंथ होगी वहाँ तक हम लोग आई की वैल्यू को इटरेट करने वाले हैं। एंड हियर वी नीड टू चेक सम कंडीशंस बिफोर एडिंग दिस ट्रैक्स डायरेक्टली बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट वन ऑडियो is repeated multiple times, so we need to check here a condition। so if player dot current track groups dot get and inside it we need to pass this integer, so I and here dot get format and simply pass 0 here dot selection flag is equal to c dot selection flag default। and I know this sounds a bit complex, okay, so and here we are trying to check selection flag of all tracks with default selection flag, which means अगर वो track selectable है तो हमें यहाँ पे उस track को add करना है। so simply audio track dot add and here just copy this above codes and just paste it below and instead of selection flag use language and dot to string, okay, and since ये language जो होगी वो short forms में होगी which means en for English, hi for Hindi, we don't want short forms, we want it in long form। so for that I am gonna use locale here, locale and simply dot display language and ये जो है शॉर्ट फॉर्म्स को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा एंड ये लूप हमारा काम कर देगी ट्रैक्स को सिलेक्ट करने का। नाउ वी नीड टू शो दिस ट्रैक्स इनसाइड दिस मटेरियल अलर्ट डायलॉग। सो जस्ट मूव हियर and dot
set items because we want to set multiple items to it. So I'm gonna use this one, and here underscore comma position, which means कौन सी item click हुई है, and alright, and here we need to pass that items. So we can't pass audio tracks directly since it's an array list. So if I pass audio tracks here, it will show me an error because it requires an array of character sequence and we are passing an array list. So हमें पहले इस array list को array of character sequence में convert करना है. So here val temp tracks is equal to audio track dot to array, and here array of nulls, and inside it char sequence, and यहाँ पे हमें वो साइज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. सो ऑडियो ट्रैक डॉट साइज, and this will convert our array list to array of character sequence. So simply pass these temp tracks here and this will resolve our error. Now here if any track is selected, हम यूज़र को बताना चाहते हैं कि वो ट्रैक सिलेक्ट हो चुका है, एंड आफ्टर डैट हम मुझे उस ट्रैक को सेट भी करना है हमारे प्लेयर के अंदर. सो सबसे पहले मैं टोस्ट में से शो कर लेता हूँ. सो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट and simply pass context here, and here audio track and simply use position, and I'm gonna use concatenation operator here. So simply selected and comma toast dot length shot dot show, and after that हमें उस ट्रैक को सिलेक्ट भी करना है. सो उसके लिए यहाँ पे ट्रैक सिलेक्टर डॉट सेट पैरामीटर्स, एंड हियर ट्रैक सिलेक्टर डॉट बिल्ड अपॉन पैरामीटर्स डॉट सेट प्रीफर्ड ऑडियो लैंग्वेज, एंड सिंपली ऑडियो ट्रैक, एंड उस पोजीशन पे जो भी लैंग्वेज हो वो यहाँ पे सेट हो जाए, एंड दिस विल डू आवर वर्क. So this code will change track for us and this code is extracting track for us, and ये वाले जो codes है ये array list को char array में convert करे. So now our codes is looking perfectly fine. Now one more thing I want to do here, play video. Okay, so now let's run our application and check whether it's working or not. So finally Gradle build हो चुका and application is installed, and now let's play any video. So I am gonna play Claws because it have multiple audio tracks, and just select this application button, and if I click on audio track then tracks select हो रहे हैं, and अगर मैं कोई track select करूँ तो audio change हो रहा है हिंदी में, and आपको ये पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको सुनाई भी नहीं दे रहा. ओके, एंड अगर मैं कोई दूसरा ऑडियो सिलेक्ट करता हूँ जिसमें ऑडियो ट्रैक्स ना हो, लेट्स से मैं अपना ही कोई वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड अगर इस पर मैं एप्लीकेशन को क्लिक करता हूँ, ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता, एंड दैट्स ऑल राइट क्योंकि यहाँ पे कोई ऑडियो ट्रैक्स अवेलेबल है ही नहीं. सो आवर ऑडियो ट्रैक्स फंक्शनैलिटी इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. सो आई होप यू enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.